हेलो दोस्तों, मेरा नाम है स्नेहासिस पहाड़ी। आपको इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूँ मिशन आइसलैंड विद इंटीग्रिटी की तरफ से। तो फिर इस वीडियो लेक्चर में हम खास करके द वे द गांधी यूज्ड टू लिव, the way he used to sustain in the pre and post independence. Okay, so in every aspect we will be discussing a clear understanding about how Gandhiji used to maintain a curriculum of living style. Okay, and a curriculum of how he used to live in the post and pre independence. So it gives a impact in the Independence Act. It gives a impact about an image about how the independent India looks like. So he appeals, his appeals to his appeals to political vibes, his appeals to different spiritualities, his appearance to the curriculum of secularism. Okay, so those all things even matters when I used to discuss about the 74 years after his death. So when I discuss all this aspect, so everyone have only one significant idea about what is there written in the Airtel page. So first and foremost thing, his cultural patience, his maintenance and relevance with reference to different communities, his way of living in the political vibes, his style of sustaining in the pre and post independence. So these are the very prior important points in regards to the Airtel page analysis. So जब हम usually discuss करते हैं, जो भी हिंदी माध्यम से होते हैं, जो मीन्स इस वीडियो में क्या यूजुअली हमको मिल रहा है, इस वीडियो में हमको कौन सा इन्फॉर्मेशन मिल रहा है कि जो कि हमारा जो भी फॉरवर्ड होगा, फॉरवर्ड ऑफ गिविंग आवर अटेम्प्ट इन ऐसे या फिर इन डिफरेंट जीएस पेपर, इट इज़ प्रायर इंपॉर्टेंट. ठीक है, हर एक चीज़ का इंपॉर्टेंस रखकर हम चलेंगे, हर एक चीज़ का इंपॉर्टेंस अगर हम लिख कर चलेंगे तो फिर ईजी बन जाएगा, वेदर वो इंग्लिश हो या फिर हिंदी हो, वेदर इट इज़ इन इंग्लिश और हिंदी, इट विल बी वेरी 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 ईजी फॉर यू वेन एवर यू आर गोइंग टू रिमेंबर, वेन एवर यू आर गोइंग टू गिव ए print or note about what is there written in the Airtel page. So when I used to read this Airtel page, I usually get in concept that none of the Airtel page mentioned about his struggle. In none of the page in this Airtel page has mentioned about the movement he has done. Okay, only his way of living has been mentioned, how he used to treat the people, it has been mentioned. In different countries, what is his impact, what is his presence has been mentioned. Okay, so those all things are been maintained in this Airtel page. So without any wastage of time, I have already given the 4-point perspective of how he used to live, how he used to live in the pre and post independence. So then after an imperative, what is all about imperative? His character, his morals and principle. ओके, जो उनका कैरेक्टर के बारे में बातचीत कर रहा है, उनका हॉनेस्टी के बारे में बातचीत किया है. उसके बाद द वे ही यूज्ड टू लिव, द वे ही यूज टू लिव इन द प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस विच आई यूज टू से द, जैसे कि हम जानते हैं उनका रेफरेंस, पॉलिटिकल रेफरेंस कैसा था, उनका बिहेवियर विद डिफरेंट पीपल्स कैसा था. ठीक है, वो सारा मैटर करता है व्हेन आई यूज टू डिस्कस अबाउट द एन इम्पेरेटिव ऑफ लिविंग स्टाइल ऑफ महात्मा गांधी. उसके बाद कल्चरल पेशेंस. तो कल्चरल पेशेंस, वी ऑल नो दैट, हम सभी को पता है जलियाना वाला बाग मसक्र इंसिडेंट, लॉर्ड डायर. उसके बाद जो हुआ था, मीन्स डिफरेंट स्ट्रगल मूवमेंट हुआ था जिसमें मैक्सिमम ऑफ पीपल हैज़ बिन किल्ड, मैक्सिमम ऑफ इंडियन पीपल हैज़ बिन किल्ड, बट स्टिल गांधी जी मेंटेन द पेशेंस. Still the leaders or the leaders of India has maintained the presence or we can say that presence in difficulty time. जो leaders presence नहीं दिखा पाए वो directly means they have been treated as an we can say that freedom fighters, but they are opposite of crime, or we can say that हम जैसे कि हम सुभाष चंद्र बोस जानते हैं, भगत सिंह जानते हैं, वो क्या है, क्रूरल्टी को मेंटेन मीन्स अहिंसा, हिंसा नहीं अहिंसा को मेंटेन कर रहे थे. कौन? नॉन वायलेंस को मेंटेन कर रहे थे गांधी जी, बट हिंसा वायलेंस को मेंटेन कर रहे थे सुभाष चंद्र बोस एंड भगत सिंह. सो इट लीड्स टू व्हाट? इट लीड्स टू द एंड ऑफ unsuccessful story which we get from Subhash Chandra Bose and Bhagat Singh, because जो चीज़ हमको मीन्स नॉन वायलेंस से मिलेगा तो फिर हम क्यों अगर वायलेंस का एक पाथ लेंगे. द थिंग्स विच यूजुअली वी गेट फ्रॉम नॉन वायलेंस, वाई वी शुड प्रिफर फॉर वायलेंस, फॉर क्रिमिनलिज्म, फॉर मेंटेनिंग हार्मनी, वी शुड हैव टू मेंटेन नॉन वायलेंस. वी मस्ट एंड शुड have to be
in their control, because they are more powerful than us, they have much more resource than us, they have lot of presence of army, even even in India itself, that they can easily successful. But still it is our country, our approach should be different. That's the reason why the culture of presence gives a significant impact. Okay, it gives a very significant impact in the presence of Gandhian culture in the Independence Act, or you can say that modern history. Okay, so then after, when I used to discuss, when I used to read this, it gives a clear systematic way of gaining independence. Okay, so when I used to give when I used to get a systematic Independence Act, what is all about systematic Independence Act? So it is all about how to create a space, how to create a space between them. Okay, how to create a space between them, how to merge ourselves with them. Then only we can express our views, we can express our sympathy towards India. Okay, that we are the people of India and we must and should have to govern our country rather than governing by any other body. So this gives a clear image of how the nation has been contributed, how the nation or freedom struggle from different area has been contributed. So this also gives an image of how we used to live in the modern India or the post independence. So then after self reluctance, so when I used to discuss about self transcendence. So self transcendent, what is all about self transcendence? It is all about making our presence, making how we usually looks like before them, how we literally how we govern them. Okay, how we express our feeling. So that is how of self reluctance, how it is also been given. इसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा point इसमें मेरे को मिला कि but I am admitted that I am not yet found it, to find truth completely, to realize oneself and one destiny, to become perfect I am painful consequence, and my imperfection and therein lies all the strength I possess, because it is a rare thing, very important rare thing for a man to know his own limitation. There is a process of individual transcendence that Gandhiji also appealed the idea of civilization, since he considered civilization as an exercise of human maturity. ठीक है, तो very अच्छा point इसमें दिया गया है. very I am really delighted that I have read this editorial analysis of Mahatma Gandhi ji. So how actually he used to sustain, how actually he used to handle the pressure which has been given by the British officers. So one thing I want to mention you, one thing I want to catch a point from all of the viewers, that if a person is handling all the country, why cannot he has been shot down by the British officer? जब हम, जैसे कि हम बाहुबली फिल्म देखे हैं, कालिकेय को जब हरतबूस जो होता है, उनको कैसे कालिकेय को जब मारा था बाहुबली ने, तो उसका इम्पैक्ट किधर बना, जो कि उनके आसपास जो भी चेले थे उन भाग निकले. तो गांधी जी को उस समय क्यों नहीं मारा गया ब्रिटिश ऑफिसर को? जैसे कि सब जानते हैं, गांधी इज द मोस्ट इम्पैक्टिंग player in the Independence Act, but why he hasn't been shot down by the British officer? The one reason is he is also been contributing to the development of the Indian nation. One thing, he is also been contributing to the development of Indian nation in a opposite manner. Okay, that's also I want to give a significant that. Then he is been protected by a lot of leaders. Agar not only he but also different leaders are also been engaged with him. Okay, and round table conference also been done with the leaders of the British officers as well as with the leaders of the Indian. Okay, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का उद्घाटन हुआ, क्यों गांधी जी का पॉलिटिकल वाइब्रेंस नहीं था उस समय? तो दैट आल्सो गिव्स ए क्लियर इम्परफेक्शन दैट ही इज नॉट बीन फिजिकली अवेलेबल फॉर द पॉलिटिकल रिच, or he just want to know how we Indians must looks like, how we usually gain our clothes, how we usually gain our foods, shelters, our resources without their involvement. That's the main motto of Gandhiji's principles. That's the main motto of Gandhiji, what he usually look like, what he used to look like, how India should look. So this is the new perspective of watching, this is the new perspective of thinking about how Gandhiji usually looked India in the
Independence Act and in the independence movement. So when I discuss about 1857 revolt, the government of India, government of Indian Act which has been passed, and the conversion of governors to viceroys has been converted, because that's the most independent struggle which is all taken as a place, has taken place in the violence form. ठीक है, वो जो हुआ था वायलेंस 1857 में, ओके यूजुअली क्या था, एक 1857 रिवोल्ट जो कि वायलेंस के रूप में था। जैसे हम ये भी जान सकते हैं कि उस वायलेंस में, ठीक है, इन दैट वायलेंस इवन आवर इंडियंस आर बिन नॉट कोऑपरेटिंग विद अस। होल इंडियन एक साथ नहीं आए थे, ओनली एक थोड़ा सा पोर्शन उसमें मिला गया था, जिसमें समा गया रानी लक्ष्मीबाई, तांत्या टोपे। तो उस समय अगर हम डिस्कस करें, उस समय का जो भी ब्लूप्रिंट निकालेंगे, तो एक 100 ईयर्स के बाद, ठीक है, 100 ईयर्स के बाद फिर से इन 1947 वी गॉट अवर इंडिपेंडेंस। सो दिस इज हाउ गांधी जी यूजुअली लुक्स लाइक इन द पर्सपेक्टिव ऑफ सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म को बहुत पर्सपेक्टिव देते थे, कम्युनिटी जनरेशन को भी बहुत पर्सपेक्टिव देते थे। उस समय दलित जो होता था या फिर लो कैस्ट पीपल जो होते थे, उनका भी संगठन उसमें हुआ था फ्रीडम मूवमेंट में, ठीक है। तो सॉरी, अगर उस सभी के पर्सपेक्टिव में अगर देखेंगे तो वेरी 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 इंटरेस्टिंग टॉपिक। जस्ट आई वांट एवरीवन फॉर द यूपीएससी प्रिपरेटेड एस्पिरेंट, आई जस्ट रिक्वेस्ट टू प्लीज रीड दिस। It gives a perfect impression of how Gandhiji usually looks like. The चंपारण मूवमेंट इन बिहार इसमें मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन एक अलग ही रूप में इसमें दर्शाया है, ठीक है, ठीक है। सो दिस इज हाउ द यूजुअली thought of how technology has been involved in this, how spiritualization has been involved in this, ठीक है। तो हर एक गॉड को इम्पोर्टेंस दे देते थे, हर एक गॉड का इम्पोर्टेंस भी चाहते थे, ठीक है, क्योंकि हर एक धर्म अलग अलग नहीं है, हर एक धर्म एक ही है, हम साथ साथ हैं। सो दिस इज हाउ यूजुअली ही लाइक्स टू गिव ए प्रिंट in the Indian map. So this is the Airtel page analysis of how actually he looks, how civilization taken place in the Independence Act. So I hope you have got an idea of how actually the Airtel page analysis has been. So happy Gandhi Jayanti to all the viewers and subscribers who has subscribed my channel. Thank you for watching my video. Thanks a lot.